हाय नीट एक्सपीरियंस होप सो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड वी आर बैक विद आवर अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये वीडियो उनके लिए है जिनका ये चैप्टर अच्छे से हो गया है और उनके लिए भी है जिनका ये चैप्टर नहीं हुआ है। इट्स अ लाइन टू लाइन रिविजन वीडियो। ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे शायद ही बहुत कम है, तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो. So the first question, who gave the two kingdom system? It was given by Carlos Linnaeus. Aristotle used simple morphological character to classify plants into he classified plants into three categories, which are known as trees, shrubs and herbs. How many kingdoms include producers? Name these kingdoms. Means there are total five kingdoms in five kingdom of classifications. So in those who include producers, that there are three, that are the Monera, Protista and Plantae. In which kingdom unicellular eukaryotic autotrophic organisms are placed? When it mentions unicellular and eukaryotic, you should be very clear that it will be Protista and none of them. In how many kingdoms sorry cellulosic cell walled organisms are present? There are two, that is the Protista and Plantae. Five kingdom classification was given by R.H. Whittaker. This so you should know, right? This one. Next, dash are the sole members of kingdom Monera. They are bacteria. The dash sorry, the bacterial structure is very dash, they are very complex in so the bacterial structure is very simple and they are very complex in behavior. And this is why I have put this. It's because this sentence is unique one, means it's never been asked, and there are chances they might ask now. So next one, ninth one, compared to many other organisms, which group show the most extensive metabolic diversity? It's bacteria. Next, dash bacteria are most abundant in nature. Which bacteria are abundant in nature? That they are heterotrophic, and in heterotrophic, decomposers are the most abundant in nature. Next one, archibacteria differ from other bacteria in having they have a special what we say structure, and that is different cell wall structure. Next, chemosynthetic autotrophic bacteria oxidized various inorganic substances such as they are the nitrates, nitrites and ammonia. This is important one, means बहुत लोग मिस करते हैं ये line, so I have included this in this video. Next, which organisms are the smallest living cell known and can survive without oxygen? It's mycoplasma. Next one, chrysophytes include dash and dash. Chrysophytes include diatoms and golden algae. They're also known as desmids. Most of the people remember desmids only, they forget to remember golden algae, so remember golden algae also. Next one, which protist processes two flagella? One lies longitudinally and other transversely. They are dinoflagellates. And in Euglena, it's one chotu wala and one motu wala. That is one short and one long flagella. Okay, they also include two flagellas. Next one, the cell wall of dinoflagellates has stiff. They have stiff cellulosic plates. Next, Euglena have a protein-rich layer called which makes their body flexible. It's pellicil. Next one, pigments in euglenoids are identical to those present in its higher plants. This is also common wala questions. Sorry, this is also common wala questions. Okay, and then next, and next 19th one. Slime molds, myxomycetes form aggregation called dash, which grows several feet. They are called as a plasmodium. You should remember myxomycetes because in NEET they have asked myxomycetes. There was some question, I don't remember the exact question, but they were referring to slime molds, but they didn't mention slime molds. They mentioned myxomycetes includes what, I don't remember the question, but yeah. So remember
Myxomycetes also, they are known as slime molds, Next one. During unfavorable conditions, Plasmodium forms spores which processes. They processes two walls. This is also one of the sentence which people neglect during their revision. मीन्स भूल जाते हैं ये कॉमन मतलब जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ ये प्लाज्मोडियम वाला है और दिस पैरासिटिक प्रोटोजोन वाला क्वेश्चन द सेल वॉल ऑफ फंगाई कंपोस्ट ये सबको याद रहता है बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना लाइक म्हणजे क्वेश्चंस माने द लाइन्स like this, and we have seen in the previous videos people tend to forget it during the revision, so I have included most of them. So without wasting time, let's get to another question. 21 dash are the primitive relative of animals. ये भी थोड़ा सा ना क्या भूल जाते हैं लोग उस पर ध्यान देना. तो I have included it is protozoans. Remember this is an important one. Next, which type of parasitic protozoan causes sleeping sickness? Which type of, means there are total 5 protozoan that they have divided, which is Trypanosoma, and it is a flagellated protozoan. Next one, cell wall of fungi are composed of, ये तो common है मैंने बोला है, chitin and polysaccharide. Also it is important, it's not, it doesn't mean that it's common है तो ध्यान नहीं देना चाहिए, ना. Next one, morels and truffles belong to which class of fungi? It's Ascomycetes. Psycho का बोल रही हूँ? Because I am a psycho. Next one. Here are some important points मतलब इस पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं ड्यूड. सो वो देते बैठूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा. सो मैंने मेंशंस किए हैं. सम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट है. दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय कॉर्नेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय oospores, basidiospores, ascospores. This all is mentioned in your NCERT book. Who are the endogenous? Ascospores, planospores, zoospores, exogenous, basidiospores, conidiospores. Right? दे आर इम्पॉर्टेंट है. दिस आर इम्पॉर्टेंट. आपको भी पता है इम्पॉर्टेंट है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट डू रिमेंबर दिस. ये तो याद ही होने चाहिए. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, dikaryotic stage is seen in only 2. They are Ascomycetes and Basidiomycetes. Next one, by which basis kingdom fungi is divided into various classes? Fungi are being divided into 4 different classes, ये तो we know, but on which basis? So they are the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. Next, mycelium of Phycomycetes is सेप्टेड है, ब्रांच है, अनब्रांच्ड है. तो फाइकोमाइसेटिस इट हैज़ अ सेप्टेड एंड सिनोसिटिक. नेक्स्ट वन, ब्रेड मोल इज ऑल्सो नोन एज राइजोपस. इम्पॉर्टेंट है. सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस फंगाई बिलोंग्स टू विच क्लास? In 4 classes it belongs to Ascomycetes. Next, dash is used extensively in biochemical and genetic work. They are the Neurospora. ये भी common question है. Next, in Basidiomycetes meiosis take place producing how many basidiospores? There are 4 basidiospores. Next, members of which class are decomposers of litter and help in mineral cycling? It is Deuteromycetes. This is a important question. Okay, this one is important. ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये भी वो क्वेश्चन है जो लोग छोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ द रिविजन के टाइम. दिस वन ऑल्सो ये भी कॉमन है. नेक्स्ट, Deuteromycetes reproduce only by asexual spores called कॉर्नेडिया. जैसे अस्कोमाइसिटिस में अस्कोस्पोर्स है, बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स है, वैसे ही ड्यूटेरोमाइसिटिस में कॉर्नेडिया. एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स. हमने सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगाई. फाइकोमाइसिटिस,
ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. ठीक है. Remember this one, that albugo is a parasitic fungi on mustard. On mustard, this mustard word is important. Okay. And if आपको ये याद करने में दिक्कत आ रही है तो यू कैन रिमेंबर दिस एब्रीविएशंस लाइक ग्राम फॉर फाइकोमाइसिटिस एंड कैन फॉर अस्कोमाइसिटिस. कैन में ई आता है, अस्कोमाइसिटिस में ई आता है. दिस क्लैन डजेंट इंक्लूड ऑल ऑफ दिस, इट ओनली इंक्लूड्स द इम्पॉर्टेंट वाले, दैट इज़ द एस्पेरेगस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. एंड पेनिसिलिन और ईस्ट तो याद ही रहेंगे ना, वो बाकियों में नहीं आते तो वो अस्कोमाइसिटिस में आते हैं. एटलीस्ट मैंने मेरे टाइम पे यही ऐसे ही याद रखा था. एंड देन बैसिडियोमाइसिटिस, इट्स पाउ 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 पाउ. वो टिकटॉक का नया वाला ट्रेंड, पाउ पाउ पाउ. एंड रिमेंबर दैट यूस्टिलागो इज causes smut and Piccinia is for the rest, that is the cause of rust. मीन्स क्या बोलते हैं वो, जेनेरा है. एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस इट्स कैट. ड्यूटेरोमाइसिटिस में कैट है. एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक कि इसमें सारे हार्ड वर्ड्स है, राइट. हार्ड वर्ड्स मतलब याद करने में दिक्कत आती है. ब्रो व्हाट इज़ दिस, ट्राइकोडर्मा तो फर्दर स्टडीज़ में आता है, बट ये थोड़ा सा नहीं क्या ऐसे हट के वर्ड्स है. तो यू कैन रिमेंबर इट बिलोंग्स इनटू ड्यूटेरोमाइसिटिस. सो दिस इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इन सम सजेशंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अप्लाई करूँगी. एंड बाय. In this video, I haven't mentioned about the virus and viroids के questions. I will make a separate two वाला video on it because ये video बहुत लंबी हो जाएगी. So do watch that video. It will be hardly of 5 minutes. I will mention it over the ad tab.